I would like to congratulate the winners of the Queen's Young Leaders Award for 2018. The programme is now in its fourth and final year, and I've had the privilege of meeting many of the previous winners both here in London and in their home countries across the Commonwealth. With that entry fee, we buy the art material and we give it to under-resourced schools so that they can participate on the same platform. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel. Thank you so much for watching. Every Friday 7 p.m. You know, sometimes we talk about humanitarian causes, sometimes it's about politics for that matter, and sometimes we talk about travel, but most of all we talk about issues and topics that matter. And aapko pata hai, 14th of August is around the corner, so first of all, Happy Independence Day to all of you. Aapko Jashan Azadi Mubarak ho. And slogans to bahut sare log bolte hain. कैंपेन्स बहुत सारे लोग निकालते हैं, टाइटल्स भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, but the fact of the matter remains the same. What are we doing for our country? Are we doing something worthwhile? So on the show today, we're going to talk a little bit about issues that matter, about change, about hope. We're going to talk a little bit about leadership as well. You know what they say about leaders? They say about leaders that a leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. So on, of course, the show today, we have somebody who is remarkable. I do admire him for his services. Please warmly welcome Mujtaba Zaidi. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam. Thank you so much, Sophie. How are you? Pleasure. I like the whole green and white. Yeah. Of course, concept, keeping in mind it is the 14th of August. 14th of August. So Mujtaba Zaidi, of course, is the founder and executive director of Discovering New Artists, DNA, so very smart with that marketing campaign. Also the recipient of the prestigious Queen's Young Leaders Award, of course, by Her Majesty the Queen Elizabeth II. I'm jealous, but I'm happy at the same time. I'm going to talk a little bit about that. And he is also an educationist. So not just that, he's won so many different awards here in Pakistan and of course across the world, I would say. So welcome to the S Stories. How are you doing today, Mujtaba? I'm good. Feeling great. Thank you so much. Feeling very patriotic again, every single day like we usually do. Yeah. So let's start with a simple question. Okay, sabse pehle to, because everyone's been talking about the Queen's Young Leaders Award, and you know, I've been seeing your pictures everywhere. I'm like, hey, you know what? I know this guy. Hey, you know what? He came over on the show. So let's talk about the award and how did you eventually get it? So basically, it was really बहुत ही you know, different एक बात थी जब मैं, you know, I got this. I'll just, you know, go very straightforward. कि मैं अपनी wife के साथ जा रहा था and we were just going for an ice cream. When I received this call from London that, you know, you have been accepted as a Queen's Young Leader awardee this year. So I was like, at first moment I was like, ये is this a prank call? So I was like, really? Who are you? तो उन्होंने फिर तब मुझे बताया कि he was like laughing crazily and they were like, जी बिल्कुल आप हो गए हैं select and it's a true thing. If you just check our number, it's on our website as well. So it's like, okay. This is happening. This is happening. Okay. So, did you like pinch yourself? No. Oh, my wife did that. Okay. Alright. उनको तो मौका चाहिए. उन्होंने कहा चलो मौके का फायदा उठाइए. तो जैसी मतलब कॉल खत्म हुई है, we were like 2 मिनट के लिए तो हम लोगों ने गाड़ी रोके रखी है कि ये हुआ क्या है. Okay. What just happened? Yeah. But I think that feeling was very amazing and I felt incredible that I'm going to the Buckingham Palace because most of the people do not even get a chance to see it from inside. Absolutely. And to meet the Queen in person, exactly, you know, wow. Yeah. और Queen से मिलने की अपनी एक you know, एक idea was very different. तो वो सारी चीज़ें जो हैं plus ये कि उसके साथ और different perks थे. It was not just about meeting the Queen only. It was about their residential program, which was full of learning and full of networking. उससे मैं सीख के बहुत कुछ आया हूँ यहाँ पर वापस पाकिस्तान में, which I think I can implement here. And बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से help करने के लिए तैयार हैं. बिल्कुल. So you know, it benefits you in a lot of ways. And not just you. By you means your country basically. Because मेरा काम जो है वो पाकिस्तान के लिए है mostly. बिल्कुल. और हम जो है वो change create करना चाहते हैं. You one of the change makers, of course. Yeah. So Mujtaba, I mean, everybody must be wondering about the fact that, you know, how can you eventually get noticed by the international media, by the international audience, and eventually, how did you get noticed as well? So what was the process? So basically, I would want to tell you that it takes a lot of efforts.
First of all, you have to work really, really, really hard. Yeah. It's not just about, you go to a school, you do one kind of activity, Yeah. and then, you get noticed. Yeah. I've been doing it since 2011. Exactly. And before that, I was doing volunteer services. But then I started in 2011 discovering new artists, Yeah. DNA को सोचने के लिए मुझे 1 हफ्ता लगा था, नाम को सिर्फ सोचने के लिए. मेरा ये सवाल था अगला कि ये डीएनए का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट? I wanted something very new, कि कुछ थोड़ा हट के होना चाहिए और उसका इवन एब्रीविएशन जो है वो भी इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि लोग जो हैं उसको देख कर ही कहें कि व्हाट्स डीएनए, बिकॉज डीएनए इट्स अ बायोलॉजिकल जर्म अदरवाइज. सो डिस्कवरिंग न्यू आर्टिस्ट नोबडी कैन इवन थिंक अबाउट दैट. तो वो एकदम दिमाग में आया है एंड आई वाज लाइक नहीं यही होगा. तो एक तो खैर ये बात हो गई. दूसरा ये कि जहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन था कि हाउ डू यू गेट नोटिस्ड. सो क्वींस यंग लीडर के लिए एक एप्लीकेशन थी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने पहले भी 1 साल अप्लाई किया था, बट देन एट दैट टाइम मे बी टू देम द इम्पैक्ट वाज नॉट इनफ. तो तब आई डिडंट गेट सेलेक्ट. बट अभी जब मैंने इस साल अप्लाई किया है तो इट वाज अ वेरी रिगरस प्रोसेस. उन्होंने पहले हमारी चेकिंग की है, बैकग्राउंड चेकिंग. 2017 में किया था ना ये अभी मैंने 2017 में किया था, बट 2016 में भी पहले मैंने अप्लाई किया था. So it was a 4-year program. So this was my last chance, and obviously the major thing was कि Queen से award लेना है. Because यहाँ पर it's a bitter reality that when you are working here you hardly get noticed. अगर आप international किसी पर्सनालिटी से नोटिस हो जाएं वो ठप्पा लग जाता है ना. तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सिंगर्स, अच्छा बॉलीवुड में गाना गाया, ओ हो क्या बात है, चलो इनका इंटरव्यू करते हैं. सेम गोस फॉर यू, व्हिच इज एक्चुअली रियली सैड बिकॉज़ वी रियली नीड टू नो आवर आर्टिस्ट, वी रियली नीड टू नो आवर फेमस पीपल, वी नीड टू नो आवर पर्सनालिटीज बिकॉज़ वी नीड टू नो आवर टैलेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू. ये सिर्फ एक ही अवार्ड नहीं है जो आपने हासिल किया है, बहुत सारे और भी अवार्ड्स हैं इन योर किटी. सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन आल्सो, एंड हाउ डिड यू इवेंचुअली गेट इन लाइन and get hold of all these awards? So if I start from the beginning, when I got selected for an exchange program to participate in one of the US universities. Okay. वहाँ पे मैं गया, I spent like good 5 months there studying there at Humboldt State University, California में था. वहाँ पे I noticed a lot कि वहाँ पे volunteerism बहुत है. At that time पाकिस्तान में बहुत कम था, but that gave me an inspiration as well कि यहाँ पर आके कुछ volunteerism को promote किया जाए. So I started, when I came back, I started this discovering new artists thing. और ये एक बहुत ही small grant से था. So that was part of their program. IREX नाम है, International Research and Exchange Program. एक्सचेंज बोर्ड, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्माइल के नाम से एक बहुत छोटा सा एक ग्रांट निकाला. I like the name of it. So that was just a $350 grant. जिससे I thought of this idea कि SOS Village जाते हैं, बच्चों से ड्राइंग करवाते हैं, and then we'll sell these paintings to generate proceeds. हम जो है वो एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे, बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा proceeds होंगे उससे हम जो है वो ये एक्टिविटी दोबारा करते रहेंगे. बट ये कि वो हमने एक्टिविटी की, दैट वेंट रियली वेल. हमने उन 30 बच्चों को भी बहुत फ़ायदा दिया, उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर की, एंड देन वी डिड दैट एक्टिविटी अगेन विद डबल चिल्ड्रन, लाइक 60 ऑफ देम. और दैट्स हाउ इट वेंट ऑन. फिर मुझे एक और ग्रांट मिला फ्रॉम प्रोजेक्ट स्माइल कि आपका जो है वो पहला वाला बहुत अच्छा था, तो अब वी गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू यू अगेन. So क्योंकि जनरली यू डोंट गेट अ सेकंड चांस, इवन यू डू गुड, बट आपको सस्टेनेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स दिखाने होते हैं. सो आई डिड दैट अगेन, और अब इस दफ़ा बुक ड्राइव थी, एंड आई गेव देम द टारगेट के वील कलेक्ट 2000 बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि हम लोगों ने, बिकॉज जो भी हो पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पीपल आर रियली लाइक चैरिटेबल, बहुत देते हैं. आई थिंक हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम, वो पूरी दुनिया में प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट जेनरस नेशंस इन द वर्ल्ड. जब कैलामिटीज आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, वी गेट टुगेदर अनफॉर्चुनेटली, बट एट द सेम टाइम इट्स अमेजिंग टू सी दैट उस वक्त जो हम ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, इट इज जस्ट आई थिंक रिमार्केबल. सो वही हमें मेरे ख्याल से नॉर्मल डेज में भी दिखानी चाहिए, वो ह्यूमैनिटी, वो केयर, वो सारी चीज़ें. मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल लाइफ में भी होनी चाहिए. सो एंड इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट, because
when it comes to NGO sector तो trust की बहुत कमी है. बिल्कुल. So it was a real major challenge for me developing this organization. एक project से शुरू हुआ, फिर different projects शुरू हुए, book drive हुआ, and mentioning book drive, so 2000 का target was exceeded till 6000. Wow. So 6000 books हमने collect की. अच्छा, किस किस्म की किताबें थी? I'm really interested. They were all story books. अच्छा. Children's story books because हमने proper guidelines दी हुई थी. And our volunteers, there were like plenty of volunteers जो कि schools में जाके पूरा दिन बैठे रहते थे. और ये कौन से इलाके के ज़्यादातर? पूरे लाहौर में. ठीक है. और even कराची और इस्लामाबाद से भी लोगों ने भेजी हैं. ठीक है. But at that time because we were very limited, हमारे बहुत छोटे-छोटे projects थे. Exactly. So वो हमने किया, but then we thought कि खाली हम सिर्फ books डोनेट करने से एक दफ़ा बच्चे पढ़ेंगे और वो फेंक देंगे इधर उधर. सो वी डिसाइडेड, आवर टीम डिसाइडेड कि हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं. सो वी वेंट टू शादरा, वहाँ पे एक स्कूल है गनी ग्रामर स्कूल. वहाँ पर हमने प्रॉपर एक कारपेट्स बिछाए, रग्स खरीदे और शेल्फ्स खरीदी और उसके बाद वहाँ पे एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनाई विच इज स्टिल देयर. एंड वी डोनेट बुक्स on continuous basis. हम उनको sponsor कर रहे हैं उनके बच्चों के education को. And we can still do that if we want. Exactly. Right. And how can we do that? Can we go online and search for it? Can you just tell people how to do that? Ghani Grammar School basically शादरा में है. वहाँ पर हमारी library है. पर आप यूँ सकते हैं कि since it's through discovering new artists, so why not like our page www.facebook.com/discoveringnewArtists. Artist can make ऐसा आता है. It's hard to pronounce. But आप वहाँ जाएं, you can inbox us or you can email us at info@discoveringnewArtists.org and our team will get back to you very quickly. क्या बात है, I love it. See, this is what I'm talking about. So I was thinking about it कि चलो 14th of August पे what shall I do? So a lot of people suggested why don't you call in singers and musicians and talk about the musical journey of Pakistan. I was like, this is something that everybody does, and it's great. People should do that. Why not? We have a beautiful history in music also. But then we have to think about the fact that अगर हमने एक change maker बनना है, अगर हमने लीडर बनना है, तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है. तो मेहनत किस तरह करते हैं और किस तरह मुकाम तक पहुँचते हैं, वो हम एक चेंज मेकर से आज पूछ रहे हैं. So my next question is going to be about leadership. What are the qualities that you think are really needed in order to become a true leader here in Pakistan? That's a question. I think the first and the foremost, I think the most important quality a leader should have is dedication. Oh yeah, true. Because there are a lot of factors जो आपके ऊपर इतना affect करते हैं कि आप अपनी अगर आप passionate ना हो, dedication से ना काम कर रहे हो, तो you get disheartened. Absolutely. And it happened the same way with me as well. जब मैंने शुरू किया था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो discourage करने में बहुत आगे थे. I'll be very honest. Discourage करने में बहुत आगे थे. बहुत आगे थे. और they were always like कि तुम्हारे इतने से काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान चेंज नहीं हो जाएगा. Exactly. ये जो कौम है ना, ये चेंज होना ही नहीं चाहती. आप करें ही कुछ नहीं इनके लिए, आप अपना सोचें और बस आप अपने बारे में काम करें. So it's always about selfish desires कि आप सिर्फ अपना सोच लें और एंड में ये है कि आपने अपने बारे में सोचना है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप उसको कहाँ से चेंज कर देंगे? देखिए बात ये है, अगर जिन्ना साहब ने हमारे बारे में ना सोचा होता, सिर्फ तो अपने बारे में सोचा होता, तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते. Same goes for a lot of our famous personalities, our talented artists and everybody who were eventually leaders and change makers also. Exactly. So dedication is the first quality that a leader should have. Passion वो होना चाहिए कि इस पैशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. एंड देन ऑब्वियसली डिटर्मिनेशन इस तरह की होनी चाहिए कि यू कीप ऑन वर्किंग इन अ वे कि आप जो है वो काम करते रहें इवन इफ देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. अनदर थिंग, नेटवर्किंग के बगैर आजकल काम नहीं होता. दैट्स ट्रू. So networking. Fortunately or unfortunately? A little bit of both. Yeah. Little bit of both. Okay. So networking is very important. Right. So these kind of even awards and fellowships, they do matter a lot. Of course, they help. कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो खुद से काम करते रहेंगे. लोगों की help जरूर चाहिए होती है. Plus another quality कि आप transparent होना बहुत जरूरी है. Okay. If you are working non-transparently, if you're not working transparently, then people would eventually stop trusting you. Right. And it will stop your work there. So the credibility factor has to be exactly there. Okay, Mujtaba, so अब नया पाकिस्तान इंशाल्लाह आ रहा है and everybody is really excited about it. I mean, regardless of whichever political party you support, the fact of the matter is that नया Pakistan is in the making.
So now let's talk a little bit about the youth also, because you know primarily we are a young nation. At the same time हमारे जो ज़्यादा percentage है लोगों की वो बच्चों की है एक लिहाज से, ठीक है, teenagers से ज़्यादा तो बच्चे ही हैं हमारे पास. तो मुझे आप ये बताइए कि how do you find our youth today, and if most of them are confused, how can you help their confusion? How can you put them on the right track? So first of all, क्योंकि हमारा basically सारे काम का जो nature है, it's with children, because we want to work at grassroots. आपने जैसे बताया कि हमारी जो है वो सारे mostly youth से भी ज़्यादा बच्चे हैं, बिल्कुल. So I think guiding them is the first thing that we should do. नया पाकिस्तान, I'm very much excited about that. नया पाकिस्तान में क्योंकि ऑलरेडी यूथ के ऊपर काम इनकी पॉलिसीज़ हैं भी, सो उन पॉलिसीज़ को कैसे फर्दर डेवलप किया जाए. आई एम एन एजुकेशनिस्ट, सो आई वुड से कि एजुकेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. एवरी नाउ हियर एंड देयर आई एम लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन के अलावा काम नहीं हो सकता. हमारी यूथ को जब तक एजुकेशनली गाइड नहीं किया जाएगा, काउंसिल नहीं किया जाएगा, this could be very worse for Pakistan. बिल्कुल से मेरे ख्याल से तालीम और तरबियत दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो तालीम के बगैर तरबियत और तरबियत के बगैर तालीम, आई थिंक वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं. सो लिटिल बिट ऑफ बोथ आई फील. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट आल्सो मुश्तबा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज गोइंग टू बी वेरी पर्टिनेंट टू योर फील्ड, व्हिच इज एजुकेशन आल्सो. कि एक दो पॉइंट्स आप बता दें कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए, और नई गवर्नमेंट के साथ साथ क्या चीज़ें जो है वो नई होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक फॉर नाउ वी आर स्टैग्नेंट. So the first thing is कि एजुकेशन के लिहाज से जो है वो बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है. मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे मेजर चीज़ जो हमारे यहाँ ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, इट्स डिफाइनिंग अ करिकुलम विच इज़ स्टैंडर्डाइज्ड ऑल ओवर पाकिस्तान. बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, I've served multiple years in schools and you know with multiple organizations. So उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि हर स्कूल का एक अलग करिकुलम है. बिल्कुल. जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी पढ़ रही है वहाँ पे रोट मेमोराइजेशन इज एट इट्स पीक. रट्टा सिस्टम शुरू से. तो मुझे बताएं कि ये जो उस्ताद हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर ग्रेट, वी सैल्यूट देम, बट यू नो कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं जो कि ये करते हैं कि अगर आप उनसे कुछ सवाल पूछो और अगर आप उनकी किसी स्टेटमेंट को निगेट करो या क्वेश्चन करो, तो वो ना ईगोइस्टिक हो जाते हैं, एंड देन दे थिंक ओ माय गॉड मुझे क्यों क्वेश्चन किया, हु आर यू, पता नहीं मैं उस्ताद हूँ. हाउ डू यू टैकल दैट माइंडसेट? So we need to train them a lot. Teachers training is very important. I am also heading a school in Chakwal. It was a very hard decision for me to move from Lahore to Chakwal and heading that school, but that school is the first one in Chakwal and the only school in Chakwal that's providing project-based learning or experiential-based learning. Its school name is Probin School System. Yes, I read about that. Yeah, so basically ये कि वहाँ पे भी हम जो अभी tackle कर रहे हैं इस चीज़ को कि एक तो टीचर से ज़्यादा पेरेंट्स की मेंटालिटी को, पेरेंट्स के एक पूरे यू नो कल्चर को, माइंडसेट को चेंज करना कि दिस इज़ द सिस्टम दैट यू नीड टू सपोर्ट. बिकॉज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में मैं आपको बताऊं, इट्स स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग. आप जैसे भी यू आर सेइंग कि यू नो इफ यू क्वेश्चन योर टीचर गेट्स ऑफेंडेड समहाउ. या सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम इज गेटिंग वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आता, लेकिन ये कि पेरेंट्स की बात आपने जो की है, completely support you with that, because ये भी होता है टीचर्स के साथ, you know, sometimes parents feel कि हमारे बच्चों को क्यों कह दिया है, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, I'm sorry, how dare you talk to my kid like that, you know, फिर वो भी हो जाता है how dare you and don't you know who I am. So ये सारे फैक्टर्स भी देखने चाहिए. It should not be like that. कि पेरेंट्स जो हैं उनको अगर if they are sending their children to school, तो फिर और अगर अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं तो फिर ट्रस्ट द टीचर्स एज वेल. और टीचर्स को ज़रूर आप टीचर्स से आके मिलें, बात करें. बीइंग अ टीचर आई नो दिस थिंग कि पेरेंट्स जो हैं अक्सर पेरेंट्स आके बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं अपने बच्चे की तरफ. इफ़ अ टीचर इज़ ट्राइंग टू टेल देम कि जी इस चीज़ के ऊपर आपको घर में भी काम करने की ज़रूरत है. एक तो ये भी है कि हमारे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि नाउ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं होता. बट बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आई वुड से कि जैसे वो तालीम और तरबियत की बात आई है, तालीम अगर हम स्कूल में देते भी रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत तरबियत करते भी रहेंगे, इफ़ दैट्स नॉट रीइंफोर्स्ड एट होम देन इट्स ऑफ नो यूज. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद. और अक्सर इसी वजह से होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आके टीचर्स से बदतमीजी कर रहे होते हैं या स्कूल में
एडमिनिस्ट्रेशन से बदतमीजी करते हैं. Angry from inside, exactly. And maybe they're frustrated, and maybe they feel that they're not getting the due attention that they deserve. बल्कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल से ज़्यादा घर में एक जो you know when they are brought up at home तो उनकी ज़्यादा तरबियत की जाए कि बड़ों का लिहाज करें. I am you know in that regard I am kind of a old school thought कि बड़ों का अदब करें. बदनाम किया है. Old school is the way to go about it actually. क्योंकि हम लोग भी उसी स्कूल से पढ़कर आए हैं, उसी स्कूलिंग सिस्टम से पढ़कर आए हैं और हमने साथ साथ देखा है चेंज. सो यू नो बीइंग इन एजुकेशन आई वुड से कि यहाँ पर जो हम पाकिस्तान में हैं उसमें एक नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम लेकर आए, बट नॉट समथिंग के अपने मफाद का सिर्फ करिकुलम ले आए. देखें, रिसर्च करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. फिनलैंड में स्कूलिंग सिस्टम है, फिनलैंड में एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट. उनके तो आई थिंक टेक्स्ट बुक्स है ही नहीं. एग्जैक्टली. they are also now moving from forest schooling to other kind of schooling, but forest schooling is one kind of schooling जो नेचर से बिल्कुल करीब होती है. जैसे ही हमारा बच्चा जब छोटा होता है तो वो घर के चीज़ों से सीखता है, बाहर हम ग्राउंड में भेजते हैं, कुछ सीखेगा. ट्रायल एंड एरर. एग्जैक्टली. सो वो प्ले बेस्ड लर्निंग होती है. प्ले बेस्ड लर्निंग जो है वो इट्स वेरी यूजफुल. और उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है. सो दैट काइंड ऑफ स्कूलिंग वी आर फॉलोइंग एट प्रॉविंस स्कूल सिस्टम एज वेल. और बहुत से ऐसे स्कूल्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. बट उस चीज़ को लेकर आए. अलबत्ता आई वुड शेयर regardless of any biasness towards any political party, but I must say कि KPK में ऐसी बातें हो रही हैं कि नहीं जी उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, बट चेंज किया है. When I was researching about the education system, तो वहाँ पे वो इस तरह की phonics और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो हो रहा है और उसकी ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं. For the first time it happened in the last 5 years कि phonics एक जॉली phonics एक किताब है जो कि बड़ी अच्छी किताब है फोनिक्स सिखाने के लिए, साउंड सिखाने के लिए. वो उसकी प्रॉपर पूरे गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग हुई है टीचर्स की और वो अब सिखा रहे हैं. So that's a major change. Fantastic. You know, this is great because हमें लगता है कि change should happen overnight. You know, हर रात को जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो समझेंगे कि नया पाकिस्तान खड़ा हो गया. ऐसा नहीं होता. It takes time and patience. Thank you so much, Mujtaba. It's such a pleasure to have you. I'm so happy to have you on board because you know I feel that this is what Naya Pakistan is all about. We have change makers right here. We have people who are making a difference. So जाते जाते दो चार ज़रा entertaining सवालात आपसे मैं पूछती हूँ. Sure. So what kind of Pakistani music do you like? The kind of Pakistani personalities you admire? And 14th of August से related एक अदद गाना बताएं जो maybe हम थोड़ी देर बाद लोगों के लिए चलाएंगे through a video. So पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिहाज से I like pop music. हमारी pop इंडस्ट्री जो है वो बीच में भी काफ़ी उसमें बूम आया था, but then you know for some reason 90s forever though. I mean 80s for sure, 90s for sure, and early 2000s. Yes. Early 2000s में बहुत बूम आया था, but then due to other reasons वो थोड़ा सा चला गया. We had EP, you know, we had Jal. We had so many underground bands जो कि बहुत अच्छा कर रहे थे. Yeah. So उसके लिहाज से I like pop music है, पाकिस्तानी pop music. ठीक है. और जहाँ तक और बात रह गई गाने की, तो जुनैद जमशेद के बहुत अच्छे गाने हैं, उनमें से कोई भी आप चला दें, they are like all very loving songs. बहुत ज़बरदस्त. Beautiful song. बहुत it's beautiful song. Wonderful. And Mujtaba, we just want you to know that we're very proud of you and people like you make Pakistan proud and shines throughout the world. आपने इतनी अच्छी बातें की हैं लोगों के सामने, तो I think एक बहुत अच्छी बात होगी कि लोग सीखें आपसे. But जाते जाते if there's any take home message in particular that you want people to know, especially for Independence Day, तो ज़रूर बताइए. As you know, I would say I would want to communicate with my youth कि यूथ में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन ये कि ट्राई टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी. वट एवर इंटरव्यू आई गिव आई पे अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन दिस थिंग कि हमारे यूथ में जितना टैलेंट है उसको पॉजिटिवली यूज़ करें और उसको अपने ही कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए यूज़ करें. यू नो, ट्राई टू गिव बैक टू योर कम्युनिटी इन अ वे दैट they are proud of you. And it's easy to go out from Pakistan. It's easy you know कि आप इस थॉट को अपने दिमाग में लाएं कि जी ठीक है हम अपने लिए काम कर लेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेंगे, पैसे बना लेंगे. I think your country needs you right now and we are facing a lot of challenges and you are the answer to these challenges. Absolutely. Wonderfully put, Mujtaba Zaidi. I expected nothing but the best from you. Thank you so much.
Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel every Friday 7 PM. और आज का जो मौक़िफ़ था, एक टॉपिक था हमारा, वो ये था that we wanted to talk about a little bit about our history. We wanted to talk a little bit about change, about the youth, about change makers also. देखिए जी, Independence Day is not just about putting our flag at the rooftop. It's not just about celebrating who we are right now on this day. It is about making a difference, taking ownership and paving way for others to follow as well. So जाते जाते एक quote जो है वो मैं कहना चाहूँगी. It goes something like this. Take a listen very carefully. It's about leadership. If your actions inspire others to dream more, learn more and become more, then you are a leader. On that note, Pakistan, Zindabad. हमें पढ़ना है और लिखना है, अपने कायद का ये सपना है, इस कौम को जगाना है, कुछ करके अब दिखाना है. I really thank you so much for watching the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel. We are live, of course, on YouTube. You have to subscribe to us as well. Apart from that, we are on Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Go ahead and connect with us and keep the spirit alive.